The flood scenario in eastern Assam continues to be worrisome as well, with incessant rains battering the entire region. In Dibrugarh district, a flood-like scenario prevails as the Brahmaputra is flowing well above the danger mark as of now. While the flow of the Brahmaputra is steady at the moment, the fact that it is flowing at about 105.70 meter, which is way above the danger mark, is causing worry for the locals. Already the river level has risen exponentially, causing several riverside settlements to get submerged. Also, with over 854 millimeters of rainfall already recorded till date, tensions prevail as further rains will aggravate the situation, further causing large-scale floods in the area. Meanwhile, our colleague Ripunjay Das brings us this ground report from the riverine areas of Dibrugarh town. Let's take a look. The situation is turning grim here in Eastern Assam's Dibrugarh district. First of all, let us go through some of the pictures here. We are just standing close to the Brahmaputra river here in Dibrugarh, which is in spate. You can see from the videos here sent by our video journalist Pranib Das. These are all live pictures coming in from Dibrugarh. And you can see, and yes, Dibrugarh, the danger mark has been breached. The Brahmaputra has breached the danger mark. It's flowing above the latest report which we collected from Central Water Commission. It says that it's flowing around 15 centimeter above the danger mark. So you can see that the condition is gradually turning worrisome and grim here in Dibrugarh. Water has entered all the areas, localities which are close to the river. Right now we are in the Marwari Patti area in Dibrugarh, just close to the Dibrugarh town, and the water has entered already various settlements, various hutments has been inundated, and people are here with us, and we would like to interact with them. कब से पानी बढ़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल दिन से बढ़ रहा है पानी, बहुत स्पीड में पानी बढ़ा है, और यहाँ में देख रहे हैं आप लोग, जितना भी हम लोगों के लोग हैं यहाँ में, सब वही लोग हैं, गरीब लोग हैं यहाँ में. कोई गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिला है अभी तक इतने. यहाँ में देख लीजिए, ये परिवार है, ये इनको देखिए आप, इनका अब हालत, यह अभी डिलीवरी का हालत में है घर में. गवर्नमेंट से अभी तक कुछ ये नहीं मिला है. So this is another shocking picture, Amrita, we are bringing in, that a pregnant lady along with her small family is here, and she is surrounded by water all around, and the government has till now not done anything. Practically, they are issuing advisories, the administration here, they are issuing advisories, they are collecting data, that is okay, but practically you can see that because videos and pictures do not lie. You can see from the videos here that a family, and the lady is pregnant along with her two small children, and the husband is also here. So the pregnant lady is surrounded by water all around, and no rescue efforts, nothing has been done till now, and this is quite shocking, and these are exclusive Northeast Live videos. क्या कहना चाहेंगे आप, इस घर के मालिक हैं? क्या बोलेंगे हम, क्या अच्छा सा देखने चाहिए, और वही बात है. कोई तो सब आकर तो हमें लेके जाता है और कुछ नहीं करता है, साथ हम लोग ऐसे ही रहता है. हम तो हाजिरा करता है आदमी है. तो यहाँ आपके परिवार घिरे हुए हैं पानी में, आपके बीवी भी अभी प्रेग्नेंट है, तो क्या कुछ गवर्नमेंट को कुछ बोला था क्या आपने? ना कुछ. कोई आता है क्या यहाँ में, बोलिए? कोई नहीं आता है ना. आने से बोलेंगे हम, नहीं आता है तो कहाँ से बोलेंगे हम. वही बात है. कुछ सहायता करने चाहिए गरीब आदमी को, वो कहाँ सहायता करता है. तो खाना वाना कैसे? अभी खाना भी कैसे बनाएगा, अभी बनाने को भूखा ही रहने पड़ेगा. और बच्चों ने कुछ खाया है, क्या बोलना चाहिए? नहीं खाया, नहीं खाया अभी. कब से खाना नहीं? लाठी पापा. हाँ ना.
পানী কেতিয়া সোমাইছে ৰাতি সোমালে কালি কালিৰ পৰা কিমানটো তেতিয়া ক'ত থাকিছাগে তুমি মই এইফালে আছোঁ আৰু পানীটো বাঢ়ি আছে অঁ This is the state of affairs here in Dibrugarh. And there are more people here also. Would like to interact with them. क्या बोलना चाहेंगे ये पानी से चारों तरफ घिरे हुए एक परिवार को हमने अभी देखा हाँ क्या करेगा हम लोग को तो यहाँ पर कोई सहायता नहीं करता है शासन के तरफ से कोई ना ना कुछ नहीं मिला ना 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 वो खाली वोट का टाइम में आएगा आप लोग वोट दीजिए उससे बाद और वो देखते ही नहीं है वो लोग को আমি ইয়াৰে বাসিন্দা হওঁ 25 বছৰৰ পৰা আমি ভোট দিওঁ ইয়াৰে অসমীয়া হওঁ লেকিন আজি তো কোনো এনেকুৱা এজন মানুহ অহা নাই যে আমাক সহায় কৰি গৈছে বা কিবা এটা হেল্প কৰিছে মোৰো মতা মানুহ নাইকিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা নাই মই কাম কৰোঁ লেকিন আজিলৈকে আমি একো এটা পোৱা নাইকিয়া যেতিয়া আমি আহিব আমাক ভোট দিবা আমি চাম আজি 25 বছৰৰ পৰা এইটো হৈছে যে আমি আজিলৈকে ইয়াত একো এটা সহায় পোৱা নাই চৰকাৰক আমি এইটোৱে দাবী কৰিম যে এবাৰ ইলেকশ্যনত আমি ভোট নিদিওঁ কেলে আমাক একো সহায় কৰা নাইকিয়া সেইটো কাৰণে আমি এবাৰ ভোট নিদিওঁ আমি যোনবি আহিলে আমি ভোট নিদিওঁ এবাৰ আৰু একো নকৰে কোনোৱে নাচায় ভোকত মৰি আছো কোনো নাচায় আজি বৰবাৰী ঘৰত যাই কিনে চিগাৰা বিচাৰিলো কোনো নিদিলে ছাৰ কোনো নিদিলে কোনো নিদিয়ে ছাৰ মই নিজে কওঁ এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো মানুহ অহা নাই নাই কোনো পানী আৰু বাঢ়ি আছে এতিয়া পানী বাঢ়ি আছে এতিয়া ক'ত যাম মাৰোৱাৰী বাৰাণ্ডাত শুব লাগিব আৰু আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে আমাৰ 3টা মানুহ আছো মোৰ ল'ৰা আছে মোৰ মটাৰ কেঞ্চাৰ আছে মানুহটো বেমাৰ আছে পৰি আছে ঘৰত Very shocking details had emerged from Dibrugarh in this flood-prone area in Dibrugarh, and this is quite pathetic and shocking that people here are crying for help and the administration is nowhere to be seen. So this is the real picture of Dibrugarh today, and these are all exclusive Northeast Live we are bringing in for our viewers this morning. The river water is still rising. That will compound the problem more. And there are the main reason last evening also we had explained is that the rain and heavy rain has been predicted in many parts of Arunachal. So that is also a major issue because entire water of the Siang belt will come through this Brahmaputra only, and the Dibrugarh becomes the first casualty in this respect. So people needs to be very much proactive in this sense, but unfortunately we have not seen anything. You have seen live pictures, people speaking themselves, a family who is staying here. I'd like to request camera person Pranip to once again show the family. They are in total distress. They need help. And this is our appeal through Northeast Live to the corridors of the power of the administration, local administration, state government, Dibrugarh administration, police, just to rescue this family. And this is the real picture of Dibrugarh this morning.